In question number 15, two APs are given. First AP is 63, 65, 67 and second AP is 3, 10 and 70. These are the two APs. And what is given? Nth term of first AP is equals to the nth term of second AP. आप दोनों के nth term फाइंड कर सकते हैं by the formula an is equals to a plus n minus 1 into d. आपको फाइंड करनी है n की वैल्यू. So you can easily do it. Nth term of first AP. आप फर्स्ट AP का nth term easily निकाल सकते हैं. That is an is equals to a. What is a? 63 plus n minus 1 into d. What is d? It will be 2. So it is an is equals to 63 plus 2n minus 2 and it will be 61 plus 2n. It is the nth term for first AP. Now you can find the nth term of second AP. That is an of 2 is equals to a. What is a? It is 3 plus n minus 1 into 10 minus 3 is 7. So it will be 3 plus 7n minus 7 and it will be 7n minus 4. It is the nth term of second AP. Now according to question में क्या कहा जा रहा है? दोनों के nth term कैसे हैं? Same. So according to question 61 plus 2n is equals to 7n minus 4 and it will be 61 plus 4 is equals to 7n minus 2n. That is 5n is equals to 65 and n is equals to 13. Answer. In question number 16 it is given third term is 16. Third term क्या है? 16 है and the seventh term exceeds the fifth term by 12. Seventh term fifth term से 12 ज़्यादा है. आपको AP फाइंड करनी है. So by the given A3 is equals to 16, we get A plus 2D is equals to 16 because A plus n minus 1 into D. n minus 1 मतलब 3 minus 1 2. So it will be A plus 2D is equals to 16. एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आ गई and the second will be A7 is equals to A5 plus 12. A7 के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? A plus 6D और A5 के प्लेस पर A plus 4D plus 12. A से A कैंसिल हो गया and 6D minus 4D is equals to 12 and 2D is equals to 12 and D is equals to 6. AP फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए रहती है और कॉमन डिफरेंस चाहिए रहता है. हमारे पास कुछ भी नहीं है. So D की वैल्यू 6 आ चुकी है तो D की वैल्यू 6 हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे. So it will be A plus 2 into 6 is equals to 16. A is equals to 16 minus 12 and A is equals to 4. तो जब हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गया और कॉमन डिफरेंस आ गया सो AP will be AP क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म इज 4, सेकेंड टर्म इज 4 plus 6 10, नेक्स्ट टर्म इज 10 plus 6 16 and so on. It is the required AP. In this question the AP is 3 8 13 and the last term is 253. You have to find the 20th term from the last term. It is important question students. Why? Because you have to find the 20th term from the last term. आपको last term से 20th term बताना है. तो इस केस में हम क्या करते हैं? AP को रिवर्स कर देते हैं. So जब हम AP को रिवर्स करेंगे तो आपका जो लास्ट टर्म है वो क्या बन जाएगा? फर्स्ट टर्म और जो फर्स्ट टर्म है वो क्या बन जाएगा? लास्ट टर्म. और सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? इट विल बी 253 minus 5. It is 248 and so on. तो इस तरह से हमारे पास ये एक AP आ गई. So what is the A?
A is 253. What is D? It will be 248 minus 253, that is minus 5. And what is AN? It is 3. So we can easily find the value of 20th term. So A20 will be A plus 19D. So A is 253 plus 19 into minus 5, because D is minus 5. It is 253 minus 95. Or when we subtract 95 from 253, we get 13 minus 5 is 8. And it here will be 4. 14 minus 9 is 5 and 1. So 20th term from last will be 158. In question number 18, it is given sum of 4th term and 8th term is 24 and sum of 6th term and 10th term is 44. So from the help of these two equations, we can find the value of A and D, and with the value of A and D, we can find the first 3 terms. So let the first term is A and common differences D. So A4 plus A8, it is given A4 plus A8 is equals to 24. We can write A plus 3D plus A plus 7D is equals to 24. It will be 2A plus 10D is equals to 24. 2A plus 10D is equals to 24. इसमें से हम A कॉमन ले 2 कॉमन ले सकते हैं. हमने 2 कॉमन लिया. It will be A plus 5D is equals to 24. ये 2 डिवाइड में आ गया. It will be A plus 5D is equals to 12. It is equation number 1. And what is the second condition? It is A6 plus A10 is equals to 44. A6 is A plus 5D and A10 is A plus 9D is equals to 44. It will be 2A plus 14D is equals to 44. इसी तरह से हम यहाँ पे भी 2 कॉमन ले सकते हैं. It will be A plus 7D is equals to 22. Now from equation 1 and 2 and by elimination method, we can find the values of A and D. So we will do it. So A plus 5D is equals to 12. Change the sign. It is cut. 7 minus 5 is 2D and 2 minus 2 0 and 2 minus 1 1. So the value of D is 10 over 2, that is 5. तो D की वैल्यू आपके पास 5 आ चुकी है और ये D की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं. It will be A plus 5 into 5 is equals to 12 and A is equals to 12 minus 25 and A is equals to minus 13. तो आपके पास A भी आ चुका है और D भी आ चुका है. आपको फर्स्ट 3 टर्म्स बताने हैं. देन फर्स्ट टर्म तो आपके पास क्या आ गया? minus 13. एंड व्हाट विल बी द सेकंड टर्म? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दीजिए. दैट विल बी minus 13 plus 5. It will be minus 8. And what will be the third term? सेकेंड टर्म में D को प्लस कर दीजिए. That is minus 8 plus 5. It is minus 3. So it is the first 3 terms of an A.